जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट। भाई माने समस्त को मो ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि ना? ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि ना? किछि प्रॉब्लम होछि मते टिके चैट सेक्शन रे जणाओ। समस्त को ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि तो? ओके, जो हमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज गढ़ौथिले, ओके आज गोटे नया चैप्टर हमें डिस्कशन करिवा। पाखापाखि 6 ରୁ 7 दिन कौन सी कारण मो बाहर को पळैथिली, सो क्लास नै पार नथिली। ओके, आज तो क्लास कंटिन्यू रहिबो। जो चैप्टर वाइज हमें जेमिति एमसीक्यू गढ़ौथिले सेमिति कंटिन्यू करिवा। प्रत्येक चैप्टर चेष्टा करिवा 100 ରୁ 150 और 150 ରୁ 200 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिवा पई। ओके, ए सब तक क्वेश्चन हला प्रत्येक चैप्टर हला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाको। ओके, कोनसी ना कोनसी गोटे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीथिबारु मु तमानक पई क्वेश्चन को नेकी आसीची। आ समस्ते चेष्टा करिवो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करिया पई। आसु न आसु क्वेश्चन चेष्टा करिवो आंसर देवा पई। ओके, क्वेश्चन ड्यूरेशन टिके अधिक रखिबा, 30 टा आ करिबानी, एथर 50 टा क्वेश्चन करिबा। ओके, कारण ओएचपीसी रो वैकेंसी हमरो आउट कर देइची। ओएचपीसी रो पाखापाखि इलेक्ट्रिकल पिला मानकर 63 टा पोस्ट अछि। सेति पई बहुत जल्दी हमें केमती एमसीक्यू टा को कंटिन्यू माने सारी दबा ताको हमें चेष्टा करिबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नेम कोन अछि ना? चैप्टर आज हम अछि डिस्कशन करिबा यार्थिंग ऊपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समस्त चार सेक्शन आंसर दियो। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यार्थिंग? पिला में जो यार्थिंग टा करूछु, यार्थिंग करिवार मेन पर्पस कोन? को कारण पई हमें यार्थिंग करूछु? ऑप्शन ए टू सेव ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट द मैकेनिक मशीनरी, टू प्रोटेक्ट सेफ पाथ टू डिसिपेट लाइटनिंग ना ओवर वोल्टेज रू प्रोटेक्शन करिवो। एक्सीलेंट चिन्मय भाई कोन कहले ना सर? टू सेव ह्यूमन बीइंग्स। तार मेन प्रॉपर्टीज ता कोन ना सर? मेन प्रॉपर्टीज ता होची यार्थिंग करिवार मेन प्रॉपर्टी हला ह्यूमन बीइंग को से प्रोटेक्ट करिवो। ए सब जिंस से करे प्रोटेक्ट करिवो, मशीन को भी मध्ये प्रोटेक्ट करिवो, लाइटिंग रू मध्ये से प्रोटेक्ट करि परिवो। ओके, आपण कहला ओवर सॉरी हमर कोन हमर कोनसी प्रकार इंटरनल फॉल्ट हेले बा लीकेज करंट भाले सेठु मध्ये से हमको बंचै परिवो। जानि पारलो ना? किंतु तार मेन पर्पस हम कोन पई यार्थिंग करूछु ना सर? ह्यूमन को बंचैया पई, ह्यूमन बीइंग्स को बंचैया प्रोटेक्ट दवा पई हम यार्थिंग करूछु। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्थिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स? यार्थिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन होबे क्वेश्चन आंसर? फर्स्ट, फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, ना फ्रॉम ओवरलोड, ना ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, ना फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। एक्सीलेंट बिकॉज़ एक्सीलेंट गुड तो एक्सीलेंट कोन ना सर? फॉर डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स। सर हमको यार्थिंग ता कोटारो प्रोटेक्ट करूची ना सर? जेमिति इलेक्ट्रिकल शॉक न होबो बा इलेक्ट्रिकल शॉक रो डेंजर जो जगह अछि सेटो प्रोटेक्ट करिया पई हमको यार्थिंग ता रिक्वायर्ड होची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन मेड ऑफ यार्थिंग प्लेट? पिले जो यार्थिंग प्लेट पई हमें कहारो हेल्प नउछु? प्लास्टिक ना वुड ना कॉपर ना माइका? देखो हमर जेति की भी हमें यार्थिंग पई व्यवहार करूछु प्लेट गुडा, सेटा गोटे गोटे कंडक्टर होबा निहाती दरकार। आ तार कोन ना सर? तार लो रेजिस्टेंस थिबे, से कंडक्टर ता हमर लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करथबार दरकार अछि। ता सहित सेटा गोटे कंडक्टर होबा निहाती दरकार। बट प्लास्टिक, वुड आ माइका ए तीनटा जाक हला कोन? गोटे गोटे इन्सुलेटर, बट कॉपर ता हला गोटे कंडक्टर। सो आमे यार्थिंग प्लेट पई कॉपर को मध्ये व्यवहार करि परिबा। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ galvanized iron plate electrode used for electric should not be less than केते होबा? केते रो कमिबो नै? देखो कोन कहिछि ना सर? जो galvanized iron plate ता हम व्यवहार करूछु कोठी ना सर? इलेक्ट्रोड भाबरे। कोठी ना? यार्थिंग रे। यार्थिंग रे इलेक्ट्रोड भाबरे आमे जो galvanized iron plate को व्यवहार करूछु तार थिकनेस ता केते रो कमिबो नाही?
6.3 mm ना 10 mm रु तळकू ना 12.33 mm रु तळकू ना 3.15 mm रु तळकू कोठा बे आंसर कौन हबो गुरुदत्त भाई एटा ऑप्शन ए हबो कोन ना सर 6.3 mm तळकू हबो नहीं ओके देखो प्लेट हमर दी प्रकार होची ओके कोन प्लेट मोस्टली हम गोटेला कॉपर प्लेट को यूज करूछु आ गोटेला हमर जीआई प्लेट को हम व्यवहार करूछु सर कॉपर प्लेट रो साइज केते रहबा दरकार ना सर कॉपर प्लेट रो साइज मोर 60 cm into 60 cm ओके into 3.15 mm रहबो तार कोन तार डायमीटर ता ओके बट जीआई पाइप रो गाल्वानाइज रो हमर अछि से जो जीआई पाइप ता तार केते रहइबो ना सर 60 into 60 into 6.30 mm एटा पचारि ए डायमीटर ता केते हो बोले पचारि छि कार ना जीआई रो साउंड आसुनी एबे साउंड क्लियर साउंड समस्त को क्लियर ना जन्मंजय भाई गुरुदत्त भाई साउंड क्लियर अछि बे ओके ए क्वेश्चन आंसर समस्त तान दियो कोन हला ना सर 6.3 mm रु तळको होबो नाही जीआई कहि छि ना देखो जीआई आबा गाल्वानाइज्ड आयरन कहि छि गाल्वानाइज्ड आयरन कते पड़ले ना सर 60 mm सॉरी 60 cm into 60 cm into 6.30 एटा हला जीआई पाई बट कॉपर पाई कोन ना सर 60 cm into 60 cm into 3.15 mm हला कॉपर पाई ओके ए दीटा रो गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम पाखा पाखी 5 रु 6 टा एग्जाम रे क्वेश्चन ता आसी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वायरिंग इज सुइटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके टेम्पररी इंस्टॉलेशन पाई आमे को टाइप रो वायरिंग करूछु व्हिच वायरिंग इज सुइटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन एक्सीलेंट सर प्लेट वायरिंग टाको आमे व्यवहार करूछु टेम्पररी इंस्टॉलेशन पाई काहा को व्यवहार करले ना सर प्लेट वायरिंग ओके आउ गोटे जिनस ई प्लेट वायरिंग रो मन रखि था तार डिस्टेंस ता केते रहउची ना सर गोटे प्लेट रु आउ गोटे प्लेट भितरे तार डिस्टेंस ता केते रहउची द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 30 to 60 cm पाखा पाखी 30 रु 60 cm रहउची ओके कोठी ना प्लेट वायरिंग रे बट बेटेन वायरिंग रे तार प्लेट रो डिस्टेंस ता केते रहउची एटा हला प्लेट वायरिंग रे प्लेट वायरिंग रे दीटा प्लेट रो डिस्टेंस केते रहइबो ना सर 30 रु 60 बट बेटेन वायरिंग रे ए जो प्लेट दीटा रो डिस्टेंस केते रहइबो ना सर ए जो प्लेट दीटा रो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रे रहइबो 10 सेंटीमीटर आ वर्टिकल रे रहइबो वर्टिकल ए सिस्टम जे तुम करछो वर्टिकल रहइबो केते ना सर 15 cm ए तीनटा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्लेट रो तीनटा क्वेश्चन पछेरुची आउ थरे कहूची मन देकी सुनो ना सर प्लेट वायरिंग ताहले सबुठारु इजीएस्ट वायरिंग बोली हमें कहूछु बा टेम्पररी इंस्टॉलेशन जोटा को हमें कहूछु सेटा ला प्लेट वायरिंग सर ए प्लेट दीटार डिस्टेंस केते रहउची ना सर जो प्लेट वायरिंग हमें करूछु नॉर्मली प्लेट वायरिंग रो दीटा प्लेट रो तार डिस्टेंस केते रहउची ना सर 30 रु 60 सेंटीमीटर रहउची बट जत्ता बेले हम बेटेन वायरिंग करूछु बेटेन वायरिंग समय रे ए जो प्लेट दीटा रो डिस्टेंस केते रहइबो ना सर दीटा पोजीशन अछि गोटे मिति वर्टिकल पोजीशन रे हम व्यवहार करि परिबा आ गोटे मिति हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे व्यवहार करि परिबा सर ए वर्टिकल पोजीशन रे प्लेट रो डिस्टेंस केते रहइबो ना सर 10 सेंटीमीटर ओके ई क्वेश्चन ता बारंबार आसुची आ गोटे कोन कहला ना हॉरिजॉन्टल समय रे ए जो प्लेट रो डिस्टेंस केते रहइबो ना सर 15 cm ए तीनटा क्वेश्चन क्लियर ना समझते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेंशंस ऑफ ईसीसी रो एक्सपेंशन माने कोन पचारि छी व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ए ईसीसी कहला ने कोन बुझुछु एक्सीलेंट सर याद कोन याद कैरिंग कंडक्टर ना याद कंटिन्यूटी कंडक्टर गुरुदत्त भाई ठीक आंसर दियो भूल करो ना सर ईसीसी माने हला कोन ना ईसीसी माने होची याद कंटिन्यूटी कंडक्टर बिकॉज़ बाय एक्सीलेंट याद कंटिन्यूटी कंडक्टर हला राइट आंसर
ओके बहुत इंपोर्टेंट रहउची क्वेश्चन टा नेक्स्ट क्वेश्चन earthing arrangement for a residential building should be inspected at an interval of dash देखो जो earthing arrangement आमे कोले गोटे रेसिडेंशियल बिल्डिंग रे ओके आमे ताको इंस्पेक्टेड करबा केते ड्यूरेशन भितरे बा इंटरवल केते रखिबा 3 मंथ ना 6 मंथ ना 9 मंथ ना 12 मंथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके कौन रहबो एक्सीलेंट सर आमे जो इंटरवल रखिबा बा जो आमे चेक करिबा को जिबा केते मंथ रे भितरे ना सर 6 मंथ भितरे आमे ताको चेक करिबा ओके 6 मंथ इंटरवल रे ताको आमे कोन इंस्पेक्टेड करिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस एट लार्ज पावर स्टेशन कोन कहला सर लार्ज पावर स्टेशन रे मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ केते रहइबो अर्थ रेजिस्टेंस केते रहइबा दरकार कोटा पचारि देखो देखो एई पावर एई जगह रु गोटे क्वेश्चन आसुची मो तुमको पांचटा जिंस कहबी से पांचटा जिंस को भले मन रखिबो ओके यार्थ रेजिस्टेंस एट अ लार्ज पावर स्टेशन हमको क्वेश्चन पचारि बट मो आउ तुमको चारि पांचटा कहते देखो फर्स्ट कहला कोन लार्ज पावर स्टेशन सेकंड रे कहला कोन ना सर मीडियम सब स्टेशन गोटे अछि मीडियम सब स्टेशन ओके आ गोटे कोन अछि ना सर आउ गोटे मोर अछि स्मॉल सब स्टेशन गोटे अछि आ गोटे अछि कोन ना सर हमर नॉर्मल बा बिल्डिंग पाई फॉर बिल्डिंग्स पाई तार रेजिस्टेंस केते रहइबा दरकार आ गोटे हला कोन माने अदर केसेस देखो पावर स्टेशन रे हमर जो याथ रेजिस्टेंस ता रहउची 0.5 रहइबा दरकार केते ना 0.5 सेमिति सेकंड रे कोन कहला मीडियम सब स्टेशन ना सर मीडियम सब स्टेशन रे पाखा पाखी 1 ओम रहइबा निहाती दरकार ओके आ कोन कहला सब स्टेशन रे को जगह रे कहउची 2 ओम आ को जगह रे कहउची 1 बट एटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोन हो ना सर सब स्टेशन मानन करे बा स्मॉल सब स्टेशन मानन करे तार हमर याथ रेजिस्टेंस ता 2 ओम रहउची ओके आ गोटे हला कोन आ गोटे हला फॉर बिल्डिंग्स पय एटा 5 ओम रहउची तार भीतर तमे नै परियो ताठर अधिक जदि हमर एयार रेजिस्टेंस हला भलो काम करिवो नै आ ओठे हला कोन अदर केसेस रे सेटा 8 ओम रहइबो कोन 8 ओम रहइबो तार एयार रेजिस्टेंस ए पांचटा पॉइंट समस्त क्लियर ना पावर स्टेशन रे 0.5 ओम रहइबो तार एयार रेजिस्टेंस मीडियम सब स्टेशन रे 1 ओम रहइबो आ गोटे कहला कोन सर सब स्टेशन जो स्मॉल सब स्टेशन अछि तार 2 ओम रहइबो आ जेति की भी हमर कोन कहला सर जेति की भी हमर बिल्डिंग्स अछि ता पय रहइबो 5 ओम्स आ रहइला अदर केसेस रे एटा 8 ओम ए पांचटा रो गोटे क्वेश्चन आछि बहुत इंपोर्टेंट हले 0.5 आ 1 ओके मीडियम सब स्टेशन आ पावर सब स्टेशन ए दिठाला इंपोर्टेंट एटा नै क्वेश्चन आछि नेक्स्ट क्वेश्चन the length of pipe electrode used for earthing should not be less than कोन कहला सर तार लेंथ ता केते कमिबा दरकार माने कमिबो नै the length of pipe जो पाइप ता हमें इलेक्ट्रोड भाबरे यूज करू छु earthing रे should not be less than केते रु कमिबो नाही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर 2.5 मीटर रु जेमिति तळकु न कमे ए जो लेंथ ता तार जेमिति 2.5 मीटर रु आउ जेमिति न कमे 2 मीटर में 1 मीटर में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ ए earthing of a live part of an electrical system कोन कहला ना सर कैजुअल रिलेशनशिप पचारेले कहार ना ऑफ earthing of a live part of electrical system कोन यार इलेक्ट्रोड तार कैजुअल रिलेशनशिप रहउची ना लिंकेज करंट ना स्टेप कैपेसिटी ना यार फोल्ड समस्त चार सेक्शन आंसर दिए क्वेश्चन नो का सहित ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम सहित ओके ऑप्शन डी कोन कहला ना अर्थ फोल्ड व्हाट इज कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ earthing of a live part of an electrical system ना सर अर्थ फोल्ड इज द कैजुअल रिलेशन कोन कहला अर्थ फोल्ड होची गोटे कैजुअल रिलेशंस रोची ऑफ earthing of live part of an electrical system ओके ऑप्शन डी हबो ऑप्शन बी नु एटा ऑप्शन डी हबो ए जो 10टा क्वेश्चन हमने गड़ेले 10टा समस्त क्लियर ना ना कहार किछि प्रॉब्लम अछि
ए 10टा क्वेश्चन समस्त क्लियर ना कहार किछि प्रॉब्लम अछि? एक्सीलेंट चिन्ह भाई 10टा रो 9टा ओके। नेक्स्ट which one among the following is not a type of earthing? Okay, which one among the following is not a type of earthing? ए देखो पाइप earthing तो अछि समस्त हमें जानिछु, ब्रश earthing कहला, स्ट्रिप earthing कहला, प्लेट सर स्ट्रिप earthing व्यवहार करिछु, प्लेट earthing व्यवहार करिछु, बट हमें ब्रश earthing के बेले व्यवहार करनु सेबला कोन earthing अछि कि नाही? सो यार ऑप्शन बी समस्तंकर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन कहला? द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंट discharge of an electrical energy into the earth through a low resistance wire is termed as gas. कौन कहला? The process of instant discharge of an electrical energy into the earth through a low resistance wire is termed, से term टाको हमें कौन बोली कहूछु? ताको कोरोना डिस्चार्ज कहूछु ना एर्थिंग बोली कहूछु ना डाइलेक्ट्रिकल बैरियर डिस्चार्ज बोली कहूछु ना डाइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज बोली कहूछु? ताको हमें कौन कहूछु? एक्सीलेंट सर, सेटा को हमें एर्थिंग बोली कहूछु। कहा को हम गोटे एर्थिंग बोली कहूछु ना सर, जो प्रोसेस रे बा इंस्टेंट डिस्चार्ज हे जाउची इलेक्ट्रिकली एनर्जी ता अर्थ को, ताको हमें कौन कहबा ना से प्रोसेस ता को हमें एर्थिंग बोली कहबा। ओके, next question, the depth at which the earthing electrodes need to be buried is dash. कौन कहला? डेप्थ, ई केते गातो करी तमे त केते भितर को पोतुछ, the depth at which the earthing electrode need to be buried is, केते भितर को रहबा दरकार, हम सरफेस रो केते डीप रे तको हमें इलेक्ट्रोड टाको ग्राउंड करिबा, 3.2 फीट ना 1 फीट ना 2.5 फीट ना सर 4 फीट, कोडा हबो? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर सेटा पाखा पाखी 4 फीट रहउची। ओके, एक्सीलेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कौन कहला? among the given symbol identify the correct symbol with respect to earth. कोन earthing? ओके, एटा टिके भूल हेछि टाइपिंग, earthing रो करेक्ट सिंबल कोन? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर, बहुत गुडा एग्जाम रे क्वेश्चन ता पड़िछि। ओके, एटा हला earthing रो सिंबल। नेक्स्ट, which of the following installation testing is conducted to check whether switches are connected in phase cable or not? कौन पहला क्वेश्चन टा बोले देखो, which of the following installation testing is conducted to check whether switches are connected in phase cables or not? कोटा को टेस्ट आमे करूछु? एर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट करूछु ना पोलैरिटी टेस्ट करूछु ना सर इन्सुलेशन एंड लीकेज टेस्ट करूछु ना ओपन सर्किट टेस्ट? क्वेश्चन टा बोले समस्त पढ़ो। फेज टा लाइव अछि ना डिस्कनेक्टेड हे जाइछि? कोटा? चिन्मय भाई एक्सीलेंट, विकास भाई एक्सीलेंट, सुनील भाई रंग अच्छ, इन्सुलेशन टेस्ट नुह कि लीकेज टेस्ट नुह, सेटा हो पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट करबा फल रे ही हमें कोन होची ना पोलैरिटी टेस्ट हम जतले करूछु तार इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आ कोन इज कंडक्टेड टू चेक whether switches are connected in phase cable or not, phase cable सहित connected हेछि ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the reasons for necessity of earthing? ए चारिटा स्टेटमेंट देला, ओएचपीसी रो फेवरेट क्वेश्चन कहले चले, माने ए टाइप रो क्वेश्चन तार फेवरेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कोटा करेक्ट कोटा इनकरेक्ट, कारण एटा बहुत लंग छै, पाखा पाखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेतले तमे देखिबो तार सॉल्यूशन बहुत गुडा, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पके छै, चारिटा स्टेटमेंट पढ़ी कि ही हमें ताको आंसर दे परिबा। Which of the following is not one of the reasons for necessity of earthing? कोटा गोटे कारण नुह।
Excellent. Sir, to increase the resistivity of a soil. Eta no. Okay. Option C ta hi hobo your answer. Next question. What should be the minimum cross sectional of the copper strip? Copper strip कहला. Okay. ए गोटे वर्ड रे ही तार क्वेश्चन आंसर लुचि अछि. Okay. गोटे कपर स्ट्रिप पचारिबो नहले जीआई स्ट्रिप पचारिबो. कपर स्ट्रिप माइले कोउटा मारिबो, जीआई स्ट्रिप माइले कोउटा मारिबो. Excellent. कोन 25 mm into 1.6 ହେଲା कार कपर स्ट्रिप पाई. आउ जीआई पाई हला 25 mm into 4 mm हला जीआई पाई. ओके. ऑप्शन बी हबो एटा 1.6 टा रहइबो कपर पाई into 4 टा रहइबो का पाई सर 25 mm into 4 टा रहइबो हमर जीआई पाई. ऑप्शन डी नो है. ऑप्शन बी क्वेश्चन ता हमर आसीथिला को एग्जाम रे को तो एक सेम क्वेश्चन हमर आसीथिला UPRVUNL रो. ओके. एग्जाम हेतिला 2022 रे ए क्वेश्चन ता आसीथिला सीट 1 नंबर सीट रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेडिंग फॉर ए केबल कैन बी अचीव्ड बाय. देखो जो ग्रेडिंग हमें करूछु केबल रो केमि तको अचीव करी. ग्रेडिंग फॉर ए केबल कैन बी अचीव्ड बाय डैश कोन सर कैपेसिटर ग्रेडिंग एंड इंटरशीथ ग्रेडिंग द्वारा हम तको पाई परिबा. कोन कहला ना सर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आ इंटरशीथ ग्रेडिंग द्वारा हम तको पाई परिबा. एक्सीलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plate electrode of a copper shall be not less than dash in thickness. तार thickness पचले कारण सर कॉपर इलेक्ट्रोड रो तार thickness ता केते रु तळकु कमिबो नाही. Plate electrode of copper shall be not less than in dash in the thickness. भाई देखो जो मेथड रे आमे इक्वलाइजिंग बा स्ट्रेस को कम माने डाइलेक्ट्रिक देखो कोन कहला ग्रेडिंग माने द मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग द स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द केबल इज नोन एज ग्रेडिंग. जहा द्वारा ना जो मेथड द्वारा आमे इक्वलाइजिंग करि पारु छु तर स्ट्रेस टाको बा तर डाइलेक्ट्रिक टाको ताकू ही आमे कहू छु केबल रो कोन ना ग्रेडिंग सिस्टम बोली. जानि पारलो गुरुदत्त भाई. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर कोन होबो ना सर ऑप्शन बी 18 टा डाउट. ओके. 3.15 होबो यार आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मेटल प्लेट पाइप ऑफ द अदर कंडक्टर electrically connected to the general mass of the earth is called. ता कोन कहू. देखो क्वेश्चन कोन कहला गोटे मेटल प्लेट हमको देइची पाइप और अदर कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हेची द जनरल मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. ताको हमें कोन कहबा ग्रिड कहबा ना एनोड कहबा ना अर्थ इलेक्ट्रोड कहबा ना कैथोड कहबा. जो मेटल प्लेट ता बा पाइप ता बा अदर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हेचंती टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ ताको हमें कोन कहबा ताको हमें अर्थ इलेक्ट्रोड कहबा. ओके. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ताको हमें अर्थ इलेक्ट्रोड बोली कहू. ए जो 10 रु 20 टा हम क्वेश्चन कंप्लीट करले ए समस्त एटा क्लियर ना कार किछि डाउट अछि.
Okay, next question answer dear. The earthing electrode should be placed within what distance in meters from the buildings whose installation system is being earthed? कौन कहला जो earth electrode टाको आमे placed करूछु within what distance हमको distance टा पहुंचे केते distance in the meter from the building जदि अछि building थारु केते distance रे रहिबा दरकार केते डिस्टेंस है 1 मीटर डिस्टेंस ना 2.5 ना 1.5 ना 2 मीटर जो माने भी 1.5 कहचो 100% करेक्ट अछि आ जो मानकर अलगा अछि समस्त टिके रीचेक करिनो ओके यार आंसर हो ऑप्शन बी कोन सर हमर बिल्डिंग थारु 1.5 मीटर डिस्टेंस रे हम रखि ताको कोन करि परिबा ना सर हम यार को प्लेस करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन For better performance at substations, the earth electrode resistance should not be more than. देखो better performance पचारि जो सबस्टेशन मानन करे earth electrode ता तार जो रेजिस्टेंस रहउची केते रु माने अधिक रहिबो नाही should not be more than केते better performance पचारि सबस्टेशन मानन करे लार्ज पावर प्लांट जदि पचार था 0.5 ओम मार था देखो 0.5 ओम रु 0.5 ओम रु 1 ओम भीतर रहिले भलो रहइबो ओके माने बेटर परफॉर्मेंस करि परिबो बट ता थारु ऊपर को जदि आसिला देन सेटा बेटर परफॉर्मेंस करिबो सो एटा यार आंसर पाखा पाखी 1 ओम पर्यंत से भलो काम करि परिबो ओके ता थारु अधिक जदि तार रेजिस्टेंस आइला से आ भलो काम करिबो नाही क्लियर ना तो यार आंसर अप्रोप्रिएट आंसर हो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is true for the earth wire? Earth wire by co statement number true. On balance current flow. Na sir slightly potential exists. Na sir return current passes through the loads. Na only fault current flows. Which of the following is true for the earth wire? Earth wire by कोटा गोटे correct answer. कोटा follow करूची. Excellent. कौन आंसर ओनली फॉल्ट करंट फ्लो हो परिबो earth wire रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन इंप्रूविंग earth resistance इंप्रूव करिया पर कोटा हमर फॉलो करने डज नॉट हेल्प earth रेजिस्टेंस को माने इंप्रूविंग जेमिति हम करि परिबा सेटा को के फॉलो करूची आ के फॉलो करू Excellent. Sir, keep the earthing point dry. जदि हमें ताको ड्राई रखिबा सेटा हमर कोन होबो ना सर इसे इंप्रूव करिवो नाही काको earth रेजिस्टेंस को बर जदि हमें कोन करिबा ना सर जदि हमें ताको कोन ताको सब बेले हमें कोन माने ओदालिया रखिबा देन से भलो रेजिस्टेंस मतलब पाथ ता पूरा क्लियर हो ओके ताको के बेले सुखिला रखिबा सेटा हमें कोन चारकोल सॉल्ट यूज करूछु आ सब बेले ताको आद्रता मुरे हमें ताको रखु न किछि किछि दिन भीतर हमें कोन पानी हमें दोछु नेक्स्ट क्वेश्चन Soil resistivity testing is the process of measuring gas to determine the conductivity of the soil. A question answer. Dinesh bhai eta option B hobo na option A hi hobo se question answer 24 number ro. Soil resistivity testing is the process of measuring gas to be determine the conductivity of the soil. Excellent. कौन सा contact point old earth electrode and earth continuity conductor okay option A ही होगा ये right answer next question sir the length of the rod and the pipe electrodes used for earthing shall not be less than केते रु कमिबो नाही same question repeated है जी okay the length of the rod जो पाइप बा रॉड को हमें व्यवहार करूछु इलेक्ट्रोड भाव रे तार earthing shall not be less than केते रु तळो कमिबो नाही Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर सेटा 2.5 रु तळको कमिबो नाही 2.5 रु तळको कमिबो नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल रेफरेंस ऑफ एन earth फॉर इलेक्ट्रिक कोन कहला पोटेंशियल रेफरेंस ऑफ एन earth फॉर earthing इज ऑलवेज बी कंसीडर्ड टू बी डैश
जो पोटेंशियल रेफरेंस अछि ऑफ एन अर्थ फॉर अर्थिंग इज ऑलवेज बी कंसीडर्ड टू बी डैश इनफाइनाइट ना 0 वोल्टेज ना 230 वोल्टेज ना 110 वोल्टेज कोडा एक्सीलेंट कोन ना सर एटा 0 वोल्टेज हमर होइबो कोन कहला ना सर जो पोटेंशियल ता हमर रेफरेंस करूची ऑफ अर्थ फॉर अर्थिंग रे जो अर्थ को मोर कोन पोटेंशियल ता रेफरेंस करूची सब बेले हमें कंसीडर करिबा जेमि सेटा 0 वोल्ट रो नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल यूज फॉर प्लेट टाइप अर्थिंग सर प्लेट टाइप अर्थिंग पई मो को टाइप रो मेटल को व्यवहार करिबी कॉपर ना सिल्वर ना एल्युमिनियम ना गोल्ड सबुठारु बेस्ट ता कहबो ओके को टाइप रो मेटल को हमें व्यवहार करिबा प्लेट टाइप अर्थिंग पई जोटे सब बेले बेस्ट एक्सीलेंट बेस्ट हैला हमरा कॉपर है कॉपर वायर को सॉरी कॉपर टा को हमें व्यवहार करिबा मेटल प्लेट भाबरे ओके मेटल प्लेट भाबरे जदि हमें ताको यूज करू कॉपर को टिके एक्सपेंसिव हो मत बट बहुत बढ़िया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थिंग यूज फॉर आवर्स वायरिंग कोन कहले हाउस वायरिंग सॉरी कोन कहले अर्थिंग यूज फॉर हाउस वायरिंग आमे जो हाउस वायरिंग रे जो अर्थिंग गुडा करूछु को टाइप रो अर्थिंग करूछु सेठी कोन व्यवहार करूछु कोल और सॉल्ट व्यवहार करूछु ना कोल एंड सुगर व्यवहार करूछु ना क्ले एंड सॉल्ट व्यवहार करूछु ना क्ले एंड सुगर व्यवहार करूछु कहा को हमें व्यवहार करूछु एक्सीलेंट कहा को हमें व्यवहार करले ना सर हमें सेठी जतबेले भी हमें घर मानन करे हमर घर मानन करे हमें अर्थिंग करूछु सेठी हमें कोल्स आउ सॉल्ट कोल्स माने कोन जानिछो कोइला बोली जाको हमें कहूछु ओके अंगार मध्ये केतरा जगह व्यवहार होउची बट कोइला आउ सॉल्ट लूण आउ कोइला को हमें व्यवहार करू चार कोइला को हम कहूछु ओके ताको हमें व्यवहार करिकि अर्थिंग ता बनउ आ सब बेले चेष्टा करिवो जो जगह रे अर्थिंग ता करूछु सेटा सब बेले आद्र रखिबा पई बा उदालिया रखिबा पई ए जो कोल और सॉल्ट रो तार रेशियो केते रहउची समस्त मते को तो केते केजी लेखाय कोल और केते केजी लेखाय सॉल्ट हमें व्यवहार करू देखो नॉर्मली हमें हाउस वायरिंग रे जेतबेला हमें अर्थिंग करूछु कोल रो परिमाण रहइबो 10 केजी आ रहइबो सॉल्ट मध्ये हम व्यवहार करबे 10 केजी पाखा पाखी टोटल हम रहइबो केते ना 20 केजी हम व्यवहार करबो ओके एक्सीलेंट विकास भाई नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following method is recommended for earthing the neutral of the alternator as per BIS 3043 रु 1966 रूल हिसाब रे कोन पचार जाई क्वेश्चन ता देखो which of the following method को मेथड गुडा recommended करूची for earthing the neutral of the alternator as per BIS एतिकी 30 नंबर ऑप्शन सी कोन सॉलिड अर्थिंग ता सहित हमर होची रेजिस्टेंस अर्थिंग ता सहित कोन रिएक्टेंस अर्थिंग ता सहित आर्च सुपरेशंस कॉइल अर्थिंग सब तो ऑल ऑफ दिस हो एक्सीलेंट समस्त अंगर करेक्ट आंसर सर ए ऑप्शन सी होबो सर सॉलिड अर्थिंग मध्ये करिवो रेजिस्टेंस अर्थिंग मध्ये ता सहित रिएक्टेंस अर्थिंग मध्ये आर्च सुपरेशंस कॉइल अर्थिंग मध्ये हेल्पफुल होची ओके ए जो 30 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करले ए 30 टा जो 30 टा को क्वेश्चन समस्त क्लियर ना आ को मानकर केते माने मार्क ठीक हेले मते के चार सेक्शन रे जणा को माने केते क्वेश्चन अटेंड करि पाले 30 टा क्वेश्चन रो नेक्स्ट आउ किछ क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबे तापर क्लास मूव करबे ओके आखा पाखी 50 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबे पर क्लास रे समस्त क्लियर 30 टा क्वेश्चन नु को मानकर केते ठीक हैला ओके विकास भाई रो 29 टा एक्सीलेंट नेक्स्ट गुरुदत्त आइकल सर मोर 20 टा ओके के भी साइलेंट हो ना समस्त चेष्टा कर आंसर दबा पे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके an electrical act connections is done to dash ओके चिन्मय भाई कर 27 टा जन्मजय भाई कर 22 टा ओके ए क्वेश्चन आंसर दियो मोटे इलेक्ट्रिकल अर्थ कनेक्शन रे हमें कोन करूछु हमें जो इलेक्ट्रिकल अर्थ कनेक्शन करू भाई अर्थ को जो कनेक्शन करूछु को कारण भाई एक्सीलेंट सर हमें शॉक को रिड्यूस करिया भाई जो हमर शॉक रो रिस्क अछि तक हमें रिड्यूस करिया भाई हमें
मोस्टली अर्थिंग को हम व्यवहार करूँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, metallic casing or electrical apparatus is always be earth to ensure gas कौन कहले तमे मेटालिकल केसिंग हो किबा इलेक्ट्रिकल जति कि हमर apparatus हो ओके सब बेले हमें ताको अर्थ कोन पय करता को जिनिस को इंश्योर करिया पय हमें इलेक्ट्रिकल apparatus हो कि मेटालिक केसिंग हो या को हमें अर्थ करू एक्सलेंट जे भी ऑपरेट ताको करूछि ना से जेमति सेफ्टी सब बेले से जेमति सेफ रे रहबो बा देखो क्वेश्चन ता हमर कोन ह्यूमन बीइंग को सेफ्ट करिवो सेटा टिके बुलेई देछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सलेंट होनी नेक्स्ट क्वेश्चन earth tester equipment is used to find the earth resistance and took current readings stands for a fixed voltage okay which of the following is considered as the earth resistance क्वेश्चन रे भल से पढ़ो देखो earth tester हमर जो इक्विपमेंट अछि ताको हम यूज करू छु फाइंड करिया पे earth रेजिस्टेंस को earth रेजिस्टेंस and to current readings okay n time for a fixed voltage ଗୋଟେ fixed voltage रे n time पर्यंत कोन करंट रो रीडिंग को बाउतावर earth रेजिस्टेंस को मेजर करिया पे हम का earth टेस्टर को व्यवहार करले को टाइप रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द earth रेजिस्टेंस किए earth रेजिस्टेंस को कंसीडर करू कोन हो एक्सीलेंट समस्तंकर कोन ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ओके ए क्वेश्चन डाला इसरो रो पीवाईक्यू क्वेश्चन मोर भी टिके डाउट अछि ए क्वेश्चन ता ओके समस्त ए क्वेश्चन ता को टिके सर्च मार दो क्वेश्चन ता को कोन तार फोटो दे जाई था टिके देखि दबे क्वेश्चन ता बट अकॉर्डिंग टू ए जो हमर एग्जाम हेतिला 2021 रे जो एग्जाम हेतिला इसरो तरफ से माने आंसर याको धरि जंदे कोन ऑप्शन बी हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन रीडिंग्स ओके ए क्वेश्चन ता टिके समस्त रीचेक आउट करे परिनबो 33 नंबर क्वेश्चन ता नेक्स्ट क्वेश्चन सर मिनिमम साइज ऑफ द earth wire permitted is dash मिनिमम साइज देला कारण गोटे earth wire मिनिमम साइज देला 34 नंबर क्वेश्चन आंसर समस्त दियो एक्सीलेंट सर 14 एसडब्ल्यूज रहइबो एसडब्ल्यूज माने कोन ना सर स्टैंडर्ड वायर गज रे 14 रहइबो तरे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन what is the minimum internal diameter of GI pipes for pipe earthings as per Indian standard minimum internal diameter ता गोटे GI pipe रो केते रहला दरकार केते रहला दरकार ना सर 38 mm रहबा दरकार ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाखा पाखी 4 रु 5 टा एग्जाम रे क्वेश्चन ता से ओके ऑप्शन बी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर 38 mm ओके नेक्स्ट व्हिच इज रिप्रेजेंट द चेसिस ग्राउंड सिंबल ओके चेसिस ग्राउंड सिंबल भाबरे कहा को हम व्यवहार करू छु को सिंबल ता को हम चेसिस ग्राउंड रो सिंबल भाबरे व्यवहार करू एक्सीलेंट कौन आसरे ऑप्शन सी या को हमें चेसिस ग्राउंड सिंबल बोली व्यवहार करू नुवा क्वेश्चन गोटे देखिया मिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल earthings for immediate discharge of an electrical energy directly into earth कौन हबो ना सर वायर विथ लो कंडक्टेंस ना वायर विथ लो रेजिस्टेंस ना वायर विथ हाई रेजिस्टेंस ना वायर विथ हाई रेजिस्टिविटी एक्सीलेंट सर वायर विथ लो रेजिस्टेंस को टाइप रो वायर को हम व्यवहार करबा यूज इन इलेक्ट्रिकल earthing ऑफ इमीडिएट डिस्चार्ज
इमीडिएट डिस्चार्ज पाई हमें कहा को व्यवहार करिबा ना सर लो रेजिस्टेंस वायर को हमें व्यवहार करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ अ मैक्सिमम करंट लीकेज इन एनी इंस्टॉलेशन ऑफ अ बीआईएस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अछि ता हिसाब रे कोटा हमर परमिसिबल करूची लिमिट ऑफ मैक्सिमम करंट लीकेज इन एनी इंस्टॉलेशन कोटा हो केते एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर 1/5000 ओके ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to bureaus of Indian standard by BIS which code is used for the design installations and calculation of the earthing system कौन कहले ना सर earthing system रे को कोड तक हमें व्यवहार करूछु कहा फाइ ना सर installation of calculation of the earthing कोड तक हमें व्यवहार करूछु एक्सीलेंट कौन ना सर आईएस रो 3043 ओके ए रूल ऑप्शन ए हबो कौन ना सर आईएस रो 3043 कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the metal body of the equipment is placed in earth connect what does it protect the equipment from से कहा को प्रोटेक्ट करूची इक्विपमेंट को जेतबेले आमे गोटे मेटल बॉडी को बा मेटल बॉडी रो ऑफ द इक्विपमेंट इज प्लेस्ड इन अर्थ मेटल बॉडी को गोटे इक्विपमेंट रो मेटल बॉडी को जदि आमे अर्थ करबा फल रे से कहा को प्रोटेक्ट कला ना कहा ठारू प्रोटेक्ट कला ओवर करंट ना ओवर वोल्टेज ना ब्रेकडाउन वोल्टेज ना लीकेज करंट ना अंडर करंट कोटा हो लीकेज करंट एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करिवो when the metal body को हमें जेतबेले of the equipment is placed in earth contact what does it protects the equipment from ना सर लीकेज करंट रो हमर इक्विपमेंट को से प्रोटेक्ट करैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is true with reference to earthing of an equipment ओ स्टेटमेंट ट्रू कहला with the reference to earthing of the equipment एक्सीलेंट बिकॉज कौन ना सर earthing प्रोटेक्ट करिवो द पर्सनल्स फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करंट ओके ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर यूपीपीसीएल टीजी2 रे क्वेश्चन आसीथिल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन insulation resistance of any wiring installation should not be less than that जेतबेले में इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन एनी वायरिंग जे कोनसी वायरिंग हो तार इंसुलेशन रो रेजिस्टेंस ता ओके केते रु कमिबो नाही शुड नॉट बी लेस देन एक्सीलेंट सर 1 मेगा ओम रु तळको हबो नाही जे ओके द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायरिंग इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम। Next question, what is the generated frequency of an Indian electric supply कौन कहला सर generated frequency पचला कहार Indian electricity supply रे ओके Indian electric supply रे हमर frequency टा केते रहउची पचला एक्सीलेंट 50 रहउची हमर इंडिया बाहर केते रहउची 400 जण बाहर हमर केते रहउची अमेरिका हो केते ना सर 60 हर्ट्ज ओके। जो फ्रीक्वेंसी रेंज टा हमर केते रहउची ना प्लस और माइनस 3% से तार वेरी करूची ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल एटी गोटे सिंबल टा देइची सिंबल टा समस्त देखो
आ समस्त को एटा गोटे को टाइप रो सिंबल एटा गोटे लाइटिंग अरेस्टर रो सिंबल ना अर्थिंग रो सिंबल ना ग्राउंडिंग रो सिंबल ना सर्किट ब्रेकर रो सिंबल identify the given symbol excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर सर एटा गोटे ग्राउंडिंग रो सिंबल ओके कहारो ना एटा गोटे ग्राउंडिंग रो सिंबल नेक्स्ट क्वेश्चन which type of material is not used to create earthing rod गोटे earthing rod बनैबा पई आमे को टाइप रो मटेरियल को व्यवहार करिबा नै कार्बन बाउंडेड पॉलीमर्स ना स्टेनलेस स्टील ना गाल्वानाइज्ड आयरन ना कॉपर बाउंडेड स्टील ए जो चारिटा मेटल मटेरियल देला ए भितर कोटा को आमे व्यवहार करिबा नै नॉट यूज बोली कहूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर हमर कार्बन बाउंडेड पॉलीमर को आमे व्यवहार करिबा नाही earthing rod बनेबा पय नेक्स्ट क्वेश्चन एनी मेटल प्लेट पाइप और other conductors which are electrically connected to the common mass of the earth is called ताको हमें कोन कहबा क्वेश्चन टाके भल से पढ़ता पर आंसर दे any metal plate pipe or other conductor which are electrically connected to the common mass of the earth is called common mass of the earth ताको हमें कोन बोली कहबा पाखा पाखी 3 रु 4 टा एग्जाम रे क्वेश्चन टा आसी ओके गोटे मेटल प्लेट बा गोटे पाइप बा गोटे कंडक्टर जे की व्यवहार कोठी होची ना सर कनेक्टेड करा जाउची कॉमन मास ऑफ द अर्थ इज ताको हमें कोन बोली कहू ना सर अर्थ इलेक्ट्रोड बोली कहू अर्थ इलेक्ट्रोड डेफिनेशन में पहुंचा दी एटा रिपीटेड है क्वेश्चन का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द अर्थिंग रेजिस्टेंस को हमें रिड्यूस करबा पय को टाइप रो मेथड को हमें व्यवहार करूछु समस्त क्वेश्चन आंसर दियो विभिन्न प्रकार मेथड रोच जता कोन ना सर प्लेट एरिया को के हमें बढ़ाई दबा ओके लंगर रड बा डीप एयर हमें करबा सब बेले चेष्टा करबा कोन जो स्पेस हमें को 1.5 मीटर बा 2 मीटर अराउंड रो एयर इलेक्ट्रोड ओके तर आंसर कोन माने सर यूजिंग मल्टीपल्स रड्स ओके ऑप्शन बी समस्तंकर करेक्ट आंसर व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द अर्थिंग रेजिस्टेंस ना सर यूज करबा में मल्टीपल्स रड्स को व्यवहार करबा नेक्स्ट क्वेश्चन the thickness of copper plate using as an earth electrode is dash thickness पचारला कार गोटे कॉपर रॉड रो थिकनेस ता पचारले केते रहबा दर एक्सीलेंट कोन 3 mm ना 3.515 mm एक्सीलेंट 3.15 mm सी ही समस्त हमर करेक्ट आंसर ओके एडी टिके मिस्टेक हे जाईची ओके ऑप्शन एपर से बढ़े जाईची सो ऑप्शन ये देखि तो मन दिया आंसर 3.15 mm होबो समस्त हमर करेक्ट अछि आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच केमिकल इज नॉट यूज्ड टू इंप्रूव अर्थिंग रेजिस्टेंस बाय सॉइल ट्रीटमेंट व्हिच केमिकल इज नॉट यूज्ड को टाइप रो केमिकल को हमें व्यवहार करू ना इंप्रूव करिया पे अर्थ रो रेजिस्टेंस बाय सॉइल ट्रीटमेंट जो सॉइल ट्रीटमेंट रे हमें को टाइप रो केमिकल को केबेले व्यवहार करू कॉपर सल्फेट ना सल्फ्यूरिक हेक्साफ्लोराइड ना सर मैग्नीशियम सल्फेट ना सर पोटेशियम नाइट्रेट एक्सीलेंट कोन ना सर सल्फर हेक्साफ्लोराइड को हमें व्यवहार करू ओके एटा ऑप्शन बी होबो जो SF6 अछि SF6 को हमें केमिकल रिएक्शन में व्यवहार करू जो सॉइल रो ट्रीटमेंट रे बा केमिकल को हमें कोडा SF6 को हमें व्यवहार करू ओके आज रो लास्ट क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन आंसर दियो आज पर BIS 1293 रो 1988 द इलेक्ट्रिकली एक्सेसरीज विथ रेटिंग
5 और 15 एम्पियर बा 250 वोल्ट चार्ज टू 6 और 16 एम्पियर 240 वोल्ट इन द ईयर। देखो को वर्ष रे हमकु चेंज कला बा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल थिला 1293 रु 1998 रूल टा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज रूल टा चेंज हेकी कोन कला ना सर जेति के हम 5 एम्पियर रो सर्किट व्यवहार से 5 हो किना 15 एम्पियर सर्किट बा 250 वोल्ट बोले हम जोडा कहू ताकू चेंज करी कोन करदेला ना 6 और 16 एम्पियर कहला तार एसेसरीज जो तार रेटिंग टा तापर केते वोल्टेज ना 240 वोल्टेज को मसिया ए क्वेश्चन ना मध्ये 3-4 थर एग्जाम रे आसी। एक्सीलेंट कोन सर 1991 मसिया सर चेंज कर दिले कि जोटा में व्यवहार करूथले 5 एम्पियर हो कि 15 एम्पियर टा 250 वोल्ट रे सेटा चेंज हे कि कोन हे गेला ना सर 6 एम्पियर बा 16 एम्पियर और 240 वोल्ट रे से ऑपरेट करी। ओके ए 50 टा क्वेश्चन को मानकर केतरा क्वेश्चन ठीक है समस्त चार सेक्शन में जणा जदि कोटे डाउट अछि समस्त मते जणा। ओके नेक्स्ट क्लास रे आ किछि क्वेश्चन हम डिस्कशन करि दबा रहूची जय जगन्नाथ। चार सेक्शन आगे जणाओ समझते कहार केतरा ठीक है और कहार केतरा भूल है के भी साइलेंट रूम में सुनील भाई चिन्मय भाई गुरुदत्त भाई ओके गुरुदत्त भाई को 36 विकास भाई तुमर केतरा रहला ओके चिन्मय भाई को 47 बहुत बढ़िया रोची एवं जय जगन्नाथ समस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू रख आगु हमर 2टा एग्जाम अछि ओरिडा एग्जाम ओएचपीसी एग्जाम ओके।